वेलकम गाइस। अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, मैं हर रोज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स जो 9, 15 और 3, 30 के बीच में होते हैं वो सारे ट्रेड्स मैं शेयर करता हूँ दो अलग अलग वीडियो में। निफ्टी का एक वीडियो और बैंक निफ्टी का एक वीडियो। तो आप वो दोनों वीडियोस रोज़ देख के सीख सकते हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग से कैसे करनी है, कहाँ पे एंटर करना है, कैसे एंटर करूँ, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करनी है। और अगर ये आप सीख लेते हो, जो कि बहुत ही आसान है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको भी करके दिखाऊंगा रियल ट्रेड्स, तो आप आसानी से उसे सीख लोगे। और अगर आप ये सीख जाते हो तो मिनिमम 5 से 10 हज़ार रुपये हर रोज़ आप कमा सकते हो। और इसके लिए कितना पैसा चाहिए? अगर एक लॉट निफ्टी में लेना है, एक लॉट बैंक निफ्टी में लेना है, तो 5 5 हज़ार रुपये का एक लॉट आएगा, 10 हज़ार रुपये। और 5 से 10 हज़ार रुपये और एवरेज में बता रहा हूँ। कभी वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, बहुत ख़राब दिन गया, तो कुछ लॉसेस हो सकते हैं, या बहुत अच्छा दिन भी आएगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, 10 से 15 हज़ार रुपये होगा। मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। बट ये होगा कैसे? ये होगा तभी जब आप, जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको ट्रेड दिखाऊंगा, एग्जैक्टली आपने भी वैसे ही कूल हेड होके सारे रूल्स को फॉलो करके, स्टॉप लॉस जिसमें सबसे बड़ा रूल है उसे फॉलो करके अगर आपको ट्रेड करते हो, जैसे इंस्ट्रक्शंस मैं बताता हूँ, ये इसे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो और रख लो। और ये रूल्स को फॉलो करो। अगर ये रूल्स को आप 100% फॉलो करते हो, और जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर वो बिहेवियर आप ट्रेडिंग के टाइम पे शो करोगे, गारंटीड आप पैसे कमाओगे। ठीक है? तो फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, हम इसे अंदर डाल देते हैं ताकि ये से थोड़ा डिस्टरबेंस नहीं होगा। थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करके निफ्टी बैंक, राइट। सो निफ्टी बैंक एक हैबिट रखना है हमें, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो हमेशा मार्क कर लेना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मार्केट इसे क्रॉस करेगी ना, यू विल हैव अ नॉलेज कि ये हो क्या रहा है, क्या हमें वहाँ पे कोई बाई या सेल ऐसा कुछ मिलने वाला है क्या। ठीक है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रीवियस हाई और प्रीवियस हाई के ऊपर गया तो बाई स्ट्रांग है, और प्रीवियस लो के नीचे गया तो सेल स्ट्रांग है। बेसिकली वो एक अपना अपॉर्चुनिटी है। हम्म। तो देखो, ये प्रीवियस हाई था, वहीं से रिजेक्शन आ रहा है इसमें। बट यहाँ देखो तो ये ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लेते हो। ट्रेंड, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ। तो कुछ जो कॉन्सेप्ट जो अपन इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, उसका बहुत मतलब एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए अच्छे तरीके से। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्राइस ऑलवेज मूव इन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट अपन बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? रूल ऑलवेज गिव स्टॉप लॉस, ये 100% फॉलो करना है। ऑलवेज एंटर इन द सेटअप, ये सब फॉलो करना है। सो अगर आप प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट करोगे तो आप थोड़ा अच्छा फॉलो कर पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि स्पीड बढ़ा दो। यूट्यूब में जाके आप स्पीड बढ़ा सकते हो, तो यू कैन इंक्रीज द स्पीड फ्रॉम 1 to 1.5 और 2, और वो 30 मिनट्स का वीडियो फिर 15 मिनट्स में हो जाएगा। 3 4 वीडियोज़ हैं, फटाफट देख लो, तो आप फॉलो कर पाओगे बहुत अच्छे से। क्योंकि एक बार इसे ढंग से अगर आपने फॉलो कर लिया तो 5 से 10 हज़ार रुपये हर रोज़ आपके बन जाएंगे। ओके, नाउ दिस सेकेंड कैंडल। नाउ द वे टू रीड दिस इज, 9:15 कैंडल है, 29 अक्टूबर 2024, निफ्टी बैंक चार्ट ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है? पहला कैंडल प्रीवियस हाई से रिजेक्शन लेके आ रहा है, दूसरा कैंडल एक हैमर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है मूविंग एवरेज लाइन पे। तो क्या है, मूविंग एवरेज लाइन पे रिजेक्शन लेगा? शायद, शायद। ओके, इसको दो तरीके हैं पढ़ने के। एक तो ये रिजेक्शन ले रहा है, बट यहाँ पे ये रिजेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस हाई, बट यहाँ पे रिजेक्शन लाइन मूविंग एवरेज लाइन से, तो मूविंग एवरेज लाइन से रिजेक्शन एक सेटअप है। अगर प्राइस ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आता है, लेकिन उसमें क्या है ना, जो एक चीज़ है वो है गैप। जब प्राइस ऊपर जाए तो मूविंग एवरेज लाइन और प्राइस के बीच में गैप होना चाहिए। दैट इज़ व्हेन दैट सेटअप वर्क्स रियली वेल। ठीक है? तो ओके, विल जस्ट ट्राई दिस आउट। इट्स अ रिस्की बेट। Okay, I'm just hinging on this, that there is a trend and it is now coming back and resting at 26 DEMA. This is a moving average line, which is a 26 daily exponential moving average. ठीक है?
नेक्स्ट। एक और रिजेक्शन वहीं से, बट अटेम्प्ट कर रहा है, राइट? अटेम्प्ट कर रहा है। ओके, अपना स्टॉप लॉस क्या होगा फिर? नाउ दैट वी हैव, लेट अस कीप द स्टॉप लॉस एज दिस 915 कैंडल का लो। इसके नीचे गया तो वी विल एग्जिट। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि व्हाट डू वी डू व्हेन द कैंडल इज लाइक जस्ट टचिंग द बाउंड, इट इज ऑन द बाउंड्री लाइन। अभी क्या करना है ऐसे में? सो मैं एक जनरली जो फंडा अपनाता हूँ वो ये कि जो स्टॉप लॉस लाइन है उसके नीचे में अगर उसका मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी है, जैसे ये कैंडल है, इसका मेजॉरिटी बॉडी ऊपर में है, राइट? यहाँ से लेके और यहाँ तक के ऊपर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे। अगर ये उल्टा होता, ये वाली अगर सपोज करो ये लाइन अपनी स्टॉप लॉस की यहाँ पे होती एंड दिस इज क्रॉस, देन वी वुड हैव गिवन द स्टॉप लॉस। ठीक है, एटलीस्ट 60% और 65 to 70% द बॉडी स्टॉप लॉस लाइन के नीचे होनी चाहिए, अदरवाइज वी कैन टेक अ बेनिफिट। ठीक है, दिस इज नॉट लाइक वी विल नॉट गिव द स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस इज मस्ट एंड वी हैव टू गिव। मार्केट के साथ रहना है, हमारा फंडा बहुत सिंपल रहेगा, हम मार्केट के साथ रहेंगे और साथ रहने के लिए जो सेटअप्स है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सेटअप क्या है? सेटअप बेसिकली बाई या सेल, उसका इस्तेमाल अपन करेंगे टू बी विद द मार्केट, और मार्केट के साथ रहेंगे तो पैसे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लुक एट दिस। अभी ये इसके लो के, इस कैंडल के लो से ये फिर से बाउंस ले लिया। सो समटाइम दिस हेल्प्स। ठीक है, समटाइम दिस हेल्प्स, बट दिस इज अ रूल। स्टॉप लॉस अगर हिट होने के बाद अगर अगला कैंडल सपोज करो इसके लो के काफ़ी नीचे आ जाए तो रनिंग कैंडल में भी निकलने में कोई बुराई नहीं है। अदरवाइज जनरली एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, एवरीथिंग 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने के बाद ही करना है। 99.9% टाइम्स में वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग बिफोर कैंडल क्लोजेस। ठीक है, and what do I keep talking? No, you can create a checklist out of it so that it will help you. फॉलो अप आया, फॉलो अप आया, फॉलो अप आया। ओके, नो दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग फॉलो अप। हाँ, high is here, all the weight is coming down, high is here, always coming down, so this is not a very good sign. And every time the close is not above the previous candle high, so that is also like, you know, one of the thing which you will have to check out for. Not very strong candles, but look at the way it has already gone and we have made 78 points. Okay. This is a 2 bar reversal, clear 2 bar reversal. Although it is not touching the high, but it's a 2 bar reversal. So what do we do now? This looks more of a sideways kind of a setup. Our entry is here, so we are already in loss. From 78 point of profit to 11 point of loss. Not INR, this is like a point only. So what do we do? What do we do here is, there is a setup, but what is the trend currently? Is the trend of a sell or is the trend of a buy? It is a trend of a sideways. Okay, so what we'll do is, we'll wait for one more candle to confirm if there is a rejection happening here. See, the only reason why I'm skeptical is whether this 2 bar reversal will work or not, because this candle has landed up right on moving average line. So, you know, can there be one more, you know, rejection from moving average line? Rejection means it's a sell, so it will be buy side. ठीक है, अगर इसके नीचे आया तो अपन स्टॉप लॉस लेंगे और दूसरा सेल का साइड का एक कॉल भी लेंगे, अपन पुट लेंगे बेसिकली। यू विल बाय अ पुट, ओके, इफ it crosses. Oh, look at this, it doesn't require now. I say 2 bar reversal again, 2 bar reversal this side, 2 bar. See, this is nothing but a say, all this is a very big candle, almost profit 132 points, hardly matter to us. What matters to us is like what your market is telling you, nothing else. Okay, so this has been a rejection line, now it has given a breakout of that. Let us see what happens next. No follow up, no follow up, and sideways. Probably this is a sideways, right?
दिस प्रीवियस कैंडल का लो के ऊपर में उसका क्लोज हुआ है. So always keep checking what is that the current candle doing versus previous candle. So previous candle का low and इसका close similar है. So at best we can say there is a trend, then there is a sideways. So there can be a breakout upwards. Can be, not necessarily, not guaranteed. And look at this candle, again a rejection. And rejection it is getting from where? Just draw a line here. So it has got rejection once, this is twice, this is third time. Third time generally it succeeds. Third time generally it succeeds. It doesn't fail, but candle is telling you clearly that it is getting rejected. So what we'll do, we'll book a profit here. It tried, right? This candle tried, this also tried. And this candle ka close is below at least this candle. So there's no more sideways at least. Okay, so we'll book the profit. We'll book the profit and we'll stand out and see what it does. Oh, okay. Let's remove all these lines, no needed. Is it taking a rejection from again from this moving average line? We don't know that. Looks like very much. We entered in a similar candle here and didn't give much of the result. See, what is this candle? Spinning top, a big, wick, which is this danda, the below one, big wicks, small body, indecision. It tells you indecision. So even okay, we'll wait for a trend bar. Trend bar like a bar which has got larger body, smaller wicks. Not as big as this. It can be as small as this. But we want that kind of a bar. So that we'll confirm that okay, there is a rejection at 26. This moving average line, this red line. Okay. This is a good candle. We can enter here. It's a trend bar kind of a candle. So what it's telling you, this trend came down sideways. So ideally there should be a red candle going below. That is what we should expect. Okay. At the same time, what we have is there is a setup, moving average rejection from moving average line. So if there is a setup with the current candle, this will supersede any previous pattern or a concept. What you have to give preference to is the setup. If there is a setup in the current candle, then that's the best thing because that will help you to be with the market. So let's buy here. And stop loss again, same moving average line. Moving average line remains our stop loss. Ooh, this is almost here and the stop loss was hit. Again it came to the same rejection line. Let us see what happens this time. It succeeds? No, it doesn't succeed. Okay, it doesn't succeed. One second, it is an inside bar and it is landing on 26 DEMA, which is moving average line. 26 DEMA is 26 daily exponential moving average, which is this line ka value. So what does that mean? Last 26 कैंडल्स का एवरेज है ये लाइन. अभी करना क्या है यहाँ पे? सो टू थिंग्स. ये इनसाइड बार है, बिल्कुल है. इनसाइड बार मतलब रिवर्सल पॉइंट. अगर इनसाइड बार टॉप पे आता है तो रिवर्सल. अगर ये रिवर्सल होना है तो क्या होगा? एक रेड कैंडल आएगा जो यहाँ से चलेगा और इसके लो के नीचे में आके बंद देगा. अगर वैसा हुआ तो हम सेल लेंगे, अदरवाइज विल स्टे पुट. आवर स्टॉप लॉस इज नॉट हिट and it's a sideways kind of stuff. So it's like too much of a entry exit is not going to give us any joy, right? So let's be there. Like we're still positive 27 points. We have 60 points of profit already booked and running में 27 points है. तो the fight नहीं लेना है. We'll have to see. Let's not be in hurry to decide कि करना क्या है. अभी भी sideways ही चल रहा है. हाँ. Now this has hit our stop loss for sure because our setup was rejection from moving average line. So it has crossed the moving average line, right? Now if you have watched my Nifty chart, Nifty trading today's session, उसमें मैंने
बहुत ही नुआंस चीज़ बताया आपको कि हड़बड़ी में नहीं रहना है एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस प्रॉफिट बुक करने के लिए। 2-3 सेकंड तो कम से कम दोगे ना। अगर 2-3 सेकंड दोगे तो क्या होता है देखना है। ये होता है जहाँ पे ये क्लोज हुआ वहीं से ग्रीन कैंडल बना और ऊपर। अब ये ग्रीन कैंडल बना तो शुरू में तो क्या है यहाँ पे ग्रीन थोड़ा थोड़ा ग्रीन ऐसे बन रहा है राइट। तो चलते हुए मार्केट में जब ये ग्रीन बन जाए तो वेट आपका स्टॉप लॉस हिट है तो आपने अपना एग्जिट बॉक्स ऑर्डर का लगा के और उस बटन पे हाथ रखना है कि ठीक है अभी क्या करना है। अगर ये रेड हुआ और इसके लो के नीचे गया तो मैं एग्जिट करूँगा और क्या करूँगा, एक ट्रेड लूँगा सेल साइड का। ठीक है, ये वो एक्सेप्शंस हैं जो 0.1% टाइम्स मार्केट में अकर होता है, उसके लिए रेडी रहना है। Okay, next. Now that this has become a two-bar reversal, we'll stay put. It has reconfirmed that it is taking a rejection at moving average line. It's taking a rejection at resistance line here. So there is a resistance here and there is a kind of support here. So every time it comes to moving average line, it takes a rejection. It goes up. Every time it goes to this, let us see. Either one side there is a breakout, right? या तो ये नीचे टूटेगा, टूटेगा तो लेंगे नीचे। अगर ये मूविंग एवरेज लाइन को तोड़ने वाली जो भी कैंडल होगी उसके नीचे में अगर ये जाना शुरू करता है तो हम सेल लेंगे। और अगर ये इस लाइन के ऊपर गया तो चुपचाप बैठ के सारे पॉइंट्स अर्न करेंगे बैंक निफ्टी के। दिस इज व्हाट वेटेड, दिस इज व्हाट वी वर वेटिंग फॉर राइट। इट गिव अ ब्रेकआउट, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। कूल, नाउ देयर इज another sideways happening now. We are in buy from here, it went sideways, took one more support at moving average line, again trend, again sideways. So market keeps moving in trend sideways, and then sometime reversal also. So sideways will turn into reversal also. ठीक है, so it will go like trend sideways, trend साइडवेज। अब यहाँ से ऊपर भी जा सकता है या ये रिवर्स होके नीचे भी आ सकता है। ऊपर जाएगा और अगर आप बाई में हो नो प्रॉब्लम, नीचे आएगा तो नीचे आने के लिए कोई सेटअप बनाएगा, वो 2 बार रिवर्सल होगा, इनसाइड बार होगा, कुछ तो होगा। उसे अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो विल एंटर इनटू दैट ट्रेड। ठीक है, निफ्टी के ट्रेड्स जाके देखो, यू विल हैव मोर आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये हमारा लाइन है, इसके नीचे में वी आर आउट, बुकिंग द प्रॉफिट, एग्जिटिंग एंड देन लुकिंग फॉर एनी सेल साइड ट्रेड। अभी तो फिलहाल हमारे फेवर में है, सो वी स्टे हियर। फेवर में है कैंडल, साइडवेज है बट फेवर में है, हमारे अगेंस्ट है, साइडवेज है। ओके, ऊपर जा रहा है बट ये कैंडल, नाउ दिस इज, so let's put this line here so that it tells you if you are supposed to exit or what. Quite close, huh? Awesome. Same thing, sideways, trend sideways, and then it is moving towards a trend, I think so. Yeah, awesome, awesome. फिर से रेड, जब भी रेड कैंडल आए ट्रेंड के बाद तो साइडवेज का एक निशानी हो सकता है, पहला साइडवेज दूसरा रिवर्सल, ठीक है, या ब्रेकआउट। तो एक्सपेक्ट कि साइडवेज है तो कुछ कर रहे हैं। What do we do here now? Look at this candle here. It is not giving us any information. What information I can draw with this? There was a sell pressure, there is a buy pressure, and all the way this buyers pushed it here, but not above this line. So till the time we are not above this line, we are in danger. But with this, let us wait. So what do we do? Let us see if it closes below this, then we are exiting and then we can take a sell trade if that creates a sell setup. No, it didn't. So we have to be ready to give our stop loss every time. Just be ready in your hand with the stop loss, then see how the market will treat you. Royally it will give you good profits, and keep thinking that you have to be with the market. So just think in all three directions. Sideways गया तो क्या,
ऊपर गया तो क्या, नीचे गया तो क्या. That way you will be very very fast in taking buy sell exit all that. So हमारे favor में will not do anything here, but this is not in our favor. It can be another sideways, and this is not sideways, boss. This is clear, clear follow up. So, and this is like a 2 bar reversal. So first candle here and second candle here. ओके आइडियली ये 2 बार रिवर्सल तो क्या इस कैंडल में अपन एंटर क्यों नहीं कर रहे हैं, दैट कैन बी अ क्वेश्चन राइट. बट लुकिंग एट हाउ इट हैज़ ट्रीटेड, लाइक हियर 1 failure, second failure, third failure, then some half-hearted attempts. So it is better than when you are in a buy trend and you want to take a sell. If it is third or fourth attempt of sell side, then you can enter in the first candle, or better to enter in the second candle if you are not very confident. So अभी अपन यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं. 386 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, विच वी एंटर्ड ऑल द वे. अपनी एंट्री कहाँ ली थी, we entered buy call here and we are exiting here. Look at this. This is how long you have to stay in the trade to earn such kind of a profit. And it's not that very difficult, right? Just maneuver with the market. What market is telling, just believe in that and just do that. सेल का ट्रेड ले रहे हैं, क्यों मार्केट बोल रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये रेस्पेक्ट दे रहा है, ये इनसाइड बार एंड अ फॉलो अप. सो इट इज रेस्पेक्टिंग दिस सेटअप. सो इफ मार्केट रेस्पेक्ट्स, we have to respect ना. ओके सेल साइड. अभी नेक्स्ट बहुत बढ़िया. आज तो मतलब ये अपन सेल लेंगे तो ये बाई के साइड में जाएगा, तो अपन भी बाई के साइड में ही जाएंगे. फिर विल टेक अ बाई, विल फ्लिप दिस ट्रेड. ये बाई का सेटअप है. कौन सा, 2 बार रिवर्सल, सिमिलर लो, सिमिलर हाई, direction change. This is the red, this is green. What is the trend, trend is buy. What is the setup, setup is buy. So we'll respect this in the very first attempt. With trend, always be with trend. रूल है, always be with trend. अगर हमें opposite sell लेना है तो we have to ensure that we have a confirmation and then we can take sell. But first attempt sell वाला नहीं लेंगे. जैसे ये पहला attempt यहाँ sellers ने किया, we did not do anything. यहाँ पे किया, बट अगेन वी डिड नॉट डू एनीथिंग एंड इट वाज मोर ऑफ अ, वी वर रीडिंग दिस लाइक अ फर्स्ट रेड कैंडल मीन्स साइडवेज का निशानी है, तो अपन एक और कैंडल का वेट कर रहे हैं. वाई वो वेट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी वांट अ कॉन्फर्मेशन टू एंटर इनटू द सेल साइड. ठीक है, यहाँ पे अभी ये बाई सेटअप इन 2 बार रिवर्सल एंड वी आर एंटरिंग हियर. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. बूम बूम. So this is how market rewards. If you be with market, market will reward you. Okay, I'll exit. I'll book the profit here. Why? There's a kind of follow up. Although there's no setup, there's not an inside bar, there's no 2 bar reversal, but this sometime this will happen. Market, we just have 2 or 3 or 4 setups, not more than that, right? Which I am using. Market may come down and it is not matching one of our setup. So what we'll do, we will stand out and see what market does. It will give us a chance. If market has to make a big move, it will give you a chance to enter. So we book a profit, we stay put here, we'll just see what market does. If it gives us a, okay, not very, we can enter in this. Okay, kind of sideways, no? Even if you could have stayed there, hardly any difference, but we exited because kind of a follow up. Not very strong candles, but if there is a follow up, one follow up means a red candle का close, फिर ये उसके नीचे, यहाँ पे close, फिर उसके ये नीचे. So this is not a good sign. Okay. Okay.
I think that's it. 711 points, 75% of the win rate. That means 3 trade I'm winning and 1 trade I'm losing. That is what I told you, right? Total we have taken 5 trades today, 4 buy side, 1 sell side, and winning was 4 trade and losing was 1 trade. Overall 711. It was 690 here and there, some 10 points. So this is how the overall trade was for the Bank Nifty today. First trade, second trade, third and fourth we exited and we again entered, and then you know the overall trade was 5 trade overall. So subscribe the channel, like, share, comment, ask as many questions as you want to, 24 hours, and I'll reply. Keep learning, keep sharing all this with your friends and family so they can also learn. अगर 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने हैं तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है. अगर आप ये लर्न कर सकते हो, डिसिप्लिन है, प्रैक्टिस कर सकते हो, दिस इज़ वेरी वेरी इजी टू डू. ओके, टेक केयर, बाय.